ओके रुचि मैम, मैं यहाँ से वीडियोस प्ले कर रहा हूँ, तो आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Ruchi ma'am, is the voice echoing? okay ma'am, I'm sharing my screen. Uh,
रुचि मैम जैसे ही आप कहेंगे लाइव आपका हो जाएगा, मैं तुरंत वीडियो प्ले कर दूंगा। उसके बाद हमारा जैसे स्टार्टिंग से हम लोगों ने चला हुआ था। Hello, Gurpreet ma'am. How are you? Good evening. Good evening, sir. All well. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, ma'am. इस टाइम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आज के अवॉर्डीज हैं वो ज्वाइन कर लें। तो लगभग 6:15 पे हम लोग अपना इवेंट जिस फ्लो से हम लोगों ने प्लान किया हुआ वो हम कंटिन्यू करेंगे। Sure, sir. Good evening, Kiran Bajaj ma'am. Good evening to all of you, all the respected awardees and respected educators who joined us. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, Midisha Bhatia ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Shweta ma'am. Good evening to all. Hello, sir. Very good evening. Thank you for having me here. Good evening, Jaratha ji. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Fatma Sogra ji. Good evening. Good evening, ma'am. Pooja ma'am. Good evening, Dr. Preeti ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Smita ma'am.
गुड इवनिंग पूनम मैम, रोशनी मैम, गुड इवनिंग। जस्ट इसके बाद हमारा आज के इवेंट का जो वीडियो है, प्रोमो वीडियो, वो हम प्ले करेंगे। उसके तुरंत बाद आज का इवेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो पंक्चुअल हमारे अवॉर्डीज हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग जसविंदर मैम। गुड इवनिंग मंजू मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग किशोरी सर। Good evening, sir. Good evening. Good evening, respected Harshvardhan sir, founder, chairperson, and all eminent speakers and guests. And happy birthday to sweet Meenakshi Jaiswal ma'am. And happy International Women's Day to everyone. Heartiest congratulations to one and all. Thank you. Happy birthday, Meenakshi. Good evening, respected sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग अशिमा मैम। आज का इवेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे इवेंट में अपना माइक ऑफ करके, म्यूट करके आप लोग रहें, ताकि किसी प्रकार का कोई बीच में मैं चाहूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे एंकर्स को या बाकी को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। First of all, happy Women's Day to all of you, all the gorgeous ladies. Happy Women's Day. Happy Women's Day, ma'am. मैं बीच में नहीं खोलूंगा मैं। much, ma'am. Same to you. नारी, नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। रंग भरी होली हो, रंग भरी होली हो, फगुनाई डोली हो, प्रेम रस पगी सी कोयल की बोली हो। मन का अनुबंध हो, मन का अनुबंध हो, प्रेम का प्रबंध हो, जीवन को परिभाषित करता निबंध हो, करता निबंध हो। Indeed, no struggle can ever man. A very gracious evening to all the dignitaries present here. I, Ritu Singla, with Ruchi Anand ma'am and Priyanka Rastogi ma'am, feel privileged to host award ceremony named PAAI रणमय Awards on the occasion of International Women's Day held by Prithvi Abhyudaya Association of India. A very gracious evening to everyone present here. PAAI
is an association founded by Honorable Dr. Harshvardhan Singh Ji. Sir is also a founder director of Shri PSM Public School, Dhahlan District, Una, situated in Himachal Pradesh. Prithvi Abhyuday Association India is currently working in more than 100 countries, and more than 10,000 educators are benefiting under the banner of the association. It is a non-profit organization for educators which not only empower educationists but also provide them a financial aid. Dr. Harshvardhan Singh Ji has more than 10 years of experience in the field of education. Moreover, Sir has left the government job, which is actually a dream come true for any Indian youngster, as an assistant professor, and currently Sir is working as an experienced consultant, an instructor educator, felicitator, motivator, and an inspiring public speaker with a vast understanding and knowledge. We feel fortunate to be a part of such organization. Now I would like to call upon our captain of ship, Shri Harshvardhan Singh Ji, to say a few words about the organization and our prestigious award. Please, sir. थैंक यू सो मच मैम, आपने एकदम से एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया है और मुझे कई बार लगता है कि ऐसे इंट्रोडक्शन की आदत मुझे अभी तक नहीं है कि मैं अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी फील करूं कि जो कुछ ऐसा कर रहा है। बट थैंक यू सो मच, आपने वो सम्मान दिया। पाई एसोसिएशन की तरफ से, पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया की ओर से मैं सभी रिस्पेक्टेड किया है उन सबको आज का जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उसकी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने इस अवार्ड का जो नेम है पाई किरणमयी अवार्ड रखा है। और पाई किरणमयी अवार्ड के पीछे का नेम रखने के पीछे का एक उद्देश्य था हमारा कि हम अपने हिस्ट्री से, अपने इतिहास से उन सबको हम एक लोगों के सामने पेश करें, लोगों के सामने रखें। आप जैसे एडुकेटर्स, आप जैसे विद्वान लोगों के आगे, आज जैसे विदेशियों के आगे हम लोग रखें कि हम अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को, प्रताप की बहन का नाम बहुत सारे एडुकेटर्स ने नहीं भी सुना होगा। किरणमयी जो कि महाराणा प्रताप की भतीजी थी और महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जो है बेटी थी। उस समय जब भारत के ऊपर, हमारे आर्यव्रत के ऊपर मुगलों का राज था, उस समय एक बादशाह जिसका के दरबार में जो है आपको पता है बहुत सारे नवरत्नों का दरबार में तानसेन जैसे कवि थे, बिरबल जैसे जो है जो प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन लगते थे। इस मेले का नाम नौरोजी मेला, जो कि 9 दिन लगा था, कंटिन्यूसली 9 दिनों तक मेला चलता और जो है हमारे जो वहां पर जो सिर्फ और सिर्फ औरतों का आना अलाउड होता था। और जब भी कोई सुंदर हिंदू स्त्री आती थी उसको जो है वो अपने भोग विलास की वस्तु समझ के उसको अपने हवस का जो शिकार बनाने की कोशिश करता। ऐसा ही एक हादसा किरणमयी के साथ हुआ। किरणमयी भी उस मेले में गई क्योंकि शक्ति सिंह जो है वो भी बादशाह अकबर की सेना में जो है एक सेनापति था। महाराणा प्रताप से रूठ करके वो आगे थे उसने। तो उस नौरोजी मेले को देखने के लिए किरणमयी भी अपनी सखियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ उस मेले के अंदर गई और वो बहुत ही सुंदर एक लड़की थी। तो जब अकबर की जो दासियों ने देखा कि एक बहुत सुंदर जो है एक लड़की आई है, तो कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, उस जो है हट के अंदर जाए, उस तंबू के अंदर जाए, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर जो है
आपका सामान मिलता है, चाहे वो चूड़ियां हैं, चाहे वो दूसरे जो है कोई मेकअप का सामान है या कुछ और चीजें। इस तरीके से बहला फुसला करके किरणमयी को वो दासियां जो है वहां ले जाती हैं जहां पर बादशाह जो बैठा हुआ था, और वहां से कहती है कि जाओ, अंदर जा करके जो भी अपनी मर्जी का सामान आप खरीदना चाहती हैं वो आप खरीद लीजिए। जैसे ही किरणमयी उस तंबू के अंदर एंटर हुई तो बादशाह अकबर जो वहां पर जो है औरत के वेश में बैठा था, उसने अंदर से जैसे अंदर उस राजपूती ने एकदम घबराया, अकबर को नीचे कहा कि तूने पता नहीं कितनी जो है ऐसी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा, कितनी ऐसी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। चोर का एक आ रहा है। उस समय कहा जाता है कि अकबर बादशाह को किरणमयी ने पूरे उस नौरोजी मेले के बीच में खड़ा करके नाक रगड़वाई थी और कसम खिलवाई थी कि आज के बाद वो नौरोजी मेला नहीं लगाएगा, ताकि दोबारा कोई हिंदू या कोई औरत, म्यूजियम के अंदर जाएंगे वो सारी की सारी आपको कहानियां और सारी की सारी चीजें जो वहां पे आपको मिलती हैं, कहीं ना कहीं वो इतिहास हमारा हमसे छीन लिया गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, जिसके ऊपर हम लोग अपना गर्व महसूस कर सके। ऐसी 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 वीरांगनाएं हमारे देश के अंदर हुई, जिन वीरांगनाओं ने देश का नाम ऊंचा ही तो किया ही किया, साथ में अपना नाम भी अमर कर लिया। मैं एक नहीं हजारों हजारों ऐसी महान वीरांगनाएं हैं, चाहे उसमें हमारी जो है रानी करमवती है, रानी पद्मावती है, या हमारी झांसी की रानी है। अगर हम आज के समाज में जब 1947 से पहले हमारा देश जो गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय की बात करें तो दुर्गा भाभी है, जिनके पति जो है भगत सिंह को जो है लाहौर जेल से छुड़ाने के लिए जो बम का जो है वो परीक्षण कर रहे थे, उसका टेस्ट कर रहे थे, तो रावी नदी के किनारे जब वो उसका परीक्षण करने के लिए गए, टेस्ट करने के लिए गए, वहां पर गलत स्विच दब गया और वो बम फट गया, और वहां पर दुर्गा भाभी हस्बैंड है वो शहीद हो गए। वो दुर्गा भाभी जो भगत सिंह की मैम साहब बन करके उनको जो है उसमें जो है बचा के लेके आई थी, कलकत्ता तक लेके गई थी। ऐसी ऐसी दुर्गा भाभी जैसी पता नहीं कितनी ऐसी वीरांगनाएं हैं, चंद्रशेखर आजाद की माता जी, और कितनी वीरांगनाओं के अगर हम नाम लिखें, नाम बोलें और उनके बारे में अगर पढ़ना शुरू करें, तो शायद मैं मानता हूं कि हमारे आंखों के अंदर अश्रु धाराओं का एक ऐसा सैलाब आएगा कि हमारी उन वीरांगनाओं ने किन विषम परिस्थितियों में कैसे जो है अपने अभिमान को भी जगाए रखा, बल्कि और साथ साथ जो है उन्होंने हमारे देश के अंदर अपना एक ऐसा इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाया जिसको आज बड़े ही गर्व के साथ लेते हैं। ऐसे एक इतिहास के अंदर एक ऐसी लड़की जिसका नाम किरणमयी, जिसके नाम पर आज ये अवार्ड फंक्शन हमने रखा है। मैं मानता हूं कि ये किरणमयी अवार्ड जो है आप सभी जो हमारी मातृशक्ति है उसके लिए एक ऐसा टाइटल नेम मैं मानता हूं कि वाकई में उनको सूट करेगा, और आप सभी कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसे ही किरणमयी, ऐसी ही जो है वीरांगनाएं हैं जो जीवन के अंदर पता नहीं कैसी कैसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी जो आपकी जो सिचुएशंस आपके अगेंस्ट होती हैं, उन सिचुएशंस में भी आप अपने आप को जो है अच्छे से जो है अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को जो संभाल पाती। और आज क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मेरा होता है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आवेश इतना होता है कि उस चीज के ऊपर बोलने का मन करता है, लेकिन समय का भी हमें देखना है। तो मैं आज ऐसी ही दो वीरांगनाएं जो हमारी इस एसोसिएशन की पिलर हैं, और उन पिलर्स के सहारे आज की एसोसिएशन हमारी रन कर रही है, और मैं कह रहा हूं कि आज के इवेंट में भी वो अपनी जो है एक एक्टिव जो भागीदारी जो है निभा रही हैं। हमारी पाई एसोसिएशन की जो नेशनल प्रेसिडेंट है मीनाक्षी जसवाल मैम, और हमारी नेशनल टीम की जो एडिटोरियल टीम की मेंबर है मिसिज प्रियंका रस्तोगी मैम, आज उन दोनों का जन्मदिन भी है, उनका हैप्पी बर्थडे भी है, तो मैं उनको भी जो शुभकामनाएं दूंगा। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपका जन्मदिन जो है हमेशा ऐसे ही बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनीज के बीच में मनाया जाए, मैं ये उम्मीद करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।
Thank you, sir. Thank फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आज हम जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ सुश्री परवेश आर्य बहन जी और पूनम आर्य बहन जी वो हमारे साथ हैं। उनको पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहन जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वह महारानी किशोरी महाविद्यालय रोहतक की पूर्व प्राचार्य रही हैं। उन्होंने उत्तर भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत की है। लड़कियों के लिए उन्होंने आत्मरक्षा सीखने के जो है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन और युवाओं के लिए नशा मुक्ति शिविर की व्यवस्था की है। आज हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा। हमें जो है इंतजार रहेगा सुश्री हमारी परवेश आर्य बहन जी का और पूनम आर्य बहन जी का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रियंका मैम से कि वो जो है हमारे जो स्पीकर्स हैं कीनोट स्पीकर्स उनका स्वागत करें। Thank you so much, Ritu ma'am. Now this is a time to call upon the keynote speakers of the day. Our first keynote speaker is Mrs. Vishakha Gupta ma'am. Ma'am is the principal of Deccan High School, Pune. We are extremely happy to hear you, ma'am. विशाखा मैम ने अभी मैम ज्वाइन नहीं किया है। हमारे गुरप्रीत मैम और डॉक्टर अर्चना बज मैम हमारे साथ हैं इस टाइम। Okay, sir. Thank you. Our next keynote speaker is Mrs. Gurpreet Kaur ma'am. Ma'am is a Chief Managing Director of Education Training in Shri Educate Limited. I request you, ma'am, to kindly enlighten the August gathering, ma'am. Thank you so much, Priyanka ma'am, and a very happy birthday to you. And I think what a day to have a birthday. Happy Women's Day. So I thought I am the luckiest because my birthday also falls on a day when the whole world celebrates it, which is, on 1st Jan. So I thought I'm lucky, but I think you are more lucky because your birthday stands for a day for women, right? And I think we are so proud of all the women who have gathered here today. And I'm very happy to be here among also talented people. Thanks to Harshvardhan sir, who's been kind enough to invite me as always. I have only met him once, but yes, I think the bonding has
kind of grown over phone only. Great. So what I would like to, just address the gathering about today is a very important part. 2 points I want to make. Number one, I think the pandemic has proven for everyone the importance of technology. Whether we like it or not, it's here to stay. But my humble request to all educators here is use technology wisely. So I am a big professor of wise use of technology. Although I am a woman in tech, but yet I also, am mindful of the negative aspect of it. So one point that I want to make is wise tech, and the second point that I want to make today is let's encourage women in tech. So I think all over the world, it's been seen that women are always kind of kept aside from science and technology, and it's more considered more for the men, right? The statistics say it, the awards also say that and reflect that. But I think high time when we as women should take up that challenge. And as educators, it is our moral responsibility to encourage our girls, our students, our wards, our girl children to come up and stand tall and strong among the women in tech, right? So that's my second point that I wanted to make. Wise tech, I just want to take a minute to, share a small story about wise tech, and then, of course, about women in tech. So I remember, long ago when I was a part of a school. Right now, I'm with a school consultancy, but I've spent 22 years in one educational institution. And long back, I think it's about 10 years back, I saw, during a school function, a lot of students were clicking photographs of each other and then posting it on social media, which was not so popular at that time. But they were, since I am based out of Delhi, so Delhi is supposed to be one place where students have a lot of exposure. So they were using and posting it on social media without the permission of the girls, right? Or whoever they were clicking. I think that is the time it struck me that we have given this gadget to these students. Normally, as parents, we always, when we give something to the students or when we send them out in public, we teach them a lot of etiquettes. This is how you should behave. This is how you should sit. This is how you should talk to the others. This is how you should behave with others. But somewhere as educators or parents, we have failed in sharing the technology, proposing things like digital literacy and etiquettes for our students, and for educators, the wise use of technology that I talk about. So that's my small story and my reason of proposing for all educators here why we should be mindful of using technology wisely. So please be mindful when you share your photographs today. I hope, Harshvardhan sir, since this meeting is being recorded, so everyone knows that you are live on YouTube. So your photographs or your names will reflect, right? So today you don't have that foundation. You can click as many pictures and you can share it on social media. But do make it a point to keep these netiquettes in your booty and also propagate it to your students, right? So I think the second story that I want to share is about the women in tech, and that's my life story. So as I said, I started as an educator. I moved on to become a head of the department, and then slowly and steadily I moved into being a edupreneur, an author, motivator, whatever you call. But lately I realized that there is a lot of scope
where we say technology usage in classroom. We start using technology, but yet we have not understood the power that it brings to our class, right? So I think as educators, our second responsibility. So just look at, my take my story as an example for yourself, and probably from today take a kind of an oath for yourself that every day I'm going to start losing out on one bad habit and building on one good habit about technology. Yes, so that is how I would like to integrate the two: wise use of technology and women in tech. So I want everyone to be empowered enough to be that smart educator which the AI era wants us to be. Let's start using our technology wisely, and let's start listening to our data, which says a lot of things about our students, about our work habits. So it's not only about making our students kind of empowered, it's also about making our students proud of us. Yes, so if data wisely, then I am sure that we will be empowered women in tech. Yes, so with that request to everyone, all educators who have gathered here today, that please make sure that you will start losing out on one bad habit and picking up one good tech tool for your classrooms every month. You can say, I'm not saying every day, every month, so that by the end of the year, we are in March right now, so by the end of the year you should at least have 9 tools absolutely empowering with you. Yes, thank you so much for this opportunity. Once again, more empowered women in tech by the end of the year. And Harshvardhan sir, I hope you take that also as a mission for yourself. Thank you so much for inviting me. Namaste, and over to you, Priyanka ma'am. Thank you so much, Gurpreet ma'am. You were so true and so thoughtful. Actually, educators or the teachers were the only sufferer during COVID, ma'am. But we have come up with all our powers and all our grace. Wonderful. I think Aisha ma'am is saying that she has enrolled in a blockchain course. Wonderful. I think that's amazing. And I just have one more request, that if you learn it, please share your knowledge also with others. Try to take it forward. Don't keep that knowledge with yourself. Try to share it further so that the others also get motivated. Right? Thank you so much. Thank you, Aisha ma'am. Thank you so much, Gurpreet ma'am. Please accept our token of appreciation, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now I would like to call upon Vishakha Gupta, ma'am. Ma'am is the principal of the Beacon High School, Pune. Please, ma'am, we are extremely happy to hear to you on this graceful evening, ma'am. Thank you so much, Priyanka ma'am. Good evening to all educators, the plethora of educators and learners on this group. Starting with me, I am first a learner and then anything else. So we women are very strong individuals. Our name itself, we men, is a combination of women as well as men. So men are only MEN, but we are WEMEN. So we are not only, we don't even only have the capacity of being soft, but we can be as strong and as dedicated, motivated, and as resilient as men. So that's the first thing with which I would like to start. No offense to the men folk on this panel, but then we are cute daughters, we are sweet sisters, we are lovely friends, we are adoring wives, we are caring mothers, we are source of strength, and we are women. And with these lines, I start by saying that women have the ultimate source of strength, which has been given to them by the Almighty, to be not only family makers, but also at the same time, they are wonderful leaders ahead in life, outside in the society.
This was not only proven by our doctors, but also by our teachers. And as Gurpreet ma'am was very rightly saying, that this was something that we proved during the COVID time, that we not only managed our houses, but we also managed our work front with equal grit and determination. Which is why I think to each, individual, each unique woman personality on this panel, I would like to say, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समंदर बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली काफी है एक घर को, एक ऑफिस को स्वर्ग बनाने के लिए. So, women have a great strength, a great power, and with this, we have seen not only in mythology, but also in the present time, be it any world, be it any fraternity, we find women taking the lead. We have women pilots, we have women doctors, entrepreneurs, we have women political leaders. So there is no front on which women have left their mark, untouched. Every field finds a woman, putting her mark there. Definitely with the support of the men at home, I would not deny the fact that we get that support and only then we are able to go ahead. But yes, we are complete in our own selves. Support definitely works well. That's very, that's a booster for us. So even if we start from history, and then when we talk about women, we cannot just talk about them being wives or partners. They are great in all fraternities. गणेश जाने जाते हैं क्योंकि पीछे पार्वती हैं. शिवाजी महाराज जाने जाते हैं क्योंकि उनको उनकी माता जिजाऊ जी ने बनाया. मुकेश अंबानी जाने जाते हैं क्योंकि नीता उनके साथ में खड़ी है. नारायण मूर्ति जाने जाते हैं क्योंकि सुधा मूर्ति ने अपने पास से 10,000 रुपए निकाल कर दिए थे कि आप कंपनी शुरू कीजिए और ये मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है जो मैं आपको देती हूँ कंपनी शुरू करने के लिए. Those 10,000 rupees were converted to multi-millions, but then it took a woman all the guts to give all her life saving to her husband and say, you go ahead and I stand strong and tall with you. Which is why I feel every woman here needs that support, that salute, but also with the kind of way we see society still not giving the due right to many women. I think it is our call that all of us as educators should stand together, hold our hands, and let those girls, let those women be educated and get their rights that is their due in society. Thank you so much. Over to you, Priyanka. Thank you so much, Vishakha ma'am. It was so nice to hear you. I also agree with you that behind every successful man, there is a woman, but behind every successful woman, there is a woman folk. Next, I would like to call upon our next keynote speaker of the evening, Dr. Ajna Waj ma'am. Ma'am is a mature, disciplined, and dedicated HR professional, career counselor, and motivational speaker, having more than 22 years of experience in picking talent and grooming into a successful professional. I request you, ma'am, to say a few words and grace the evening. Thank you so much, Priyanka ma'am. Yes, sir. Just a second, ma'am. I'm so sorry कि बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ. हमारे आज के फेस ऑफ द इवेंट हमारे मैम ने ज्वाइन कर लिया है, अंकिता मैम ने. We will soon connect you, Archana ma'am. Sure. So it's a time, as we have come to know our face of the event, Ankita ma'am has joined. So it's a time to call upon our face of the event, that is Lieutenant Colonel Ankita Srivastav ma'am. We welcome you, ma'am. Ma'am is a lady born with a flair of natural narration, has many feathers in her multiple hats that she wears with great ease. She started as a poet, and apart from getting published, her poems got broadcast on air.
and also got published in American Poetry Anthology. Great, ma'am. Having joined Indian Army as a first girl from Allahabad in 1993, she walked beauty pageant, ramps, and won Tanishq Big Mem Saab 2008 and Glad Rags Mrs. India 2009, winning the most vivacious award, thus creating history in her own unique way. A motivational speaker and a trainer by passion for grooming men and women for being better at their profession, she conducts lectures across the country. Ma'am is a contributed author in more than 15 anthologies. Many of her writings are published online, and Ma'am is there on Kindle too. I feel honored to call Ma'am to address the August gathering, Ma'am. Please, Ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka. I'm honored to be here among such vibrant audience. Am I audible? Yeah, ma'am, you are audible. Okay, so thank you so much. I am feeling, today we can talk about women empowerment, as we say. And just now, I think you made a statement, I heard, that behind every successful man, there's a woman. And you said, but behind a successful woman, there are women folks. You said that. So, and I just want to tell you something. The day all of us, I tell myself, I'm not trying to teach anybody. The day I, as a woman, start encouraging and supporting every other woman who crosses my field, whether in my family, whether in my professional sphere, and I start defending her behind her back, then I will be truly empowered. Every woman will be empowered then if she encourages, supports the other woman in public without the fear of being that she will move ahead of her, and at the same time defending behind her back. Because the kind of confidence a woman has, when she reaches that confidence level, that is the time nobody can move her, nobody can shake her. That is truly women empowerment. Don't you agree? Yes, ma'am. We do agree, ma'am. Okay. I just wanted to make it a very, I don't want to sound like a Mahatma Buddha or something like that. I'm a very normal, mortal, human mortal, basically a normal person. I just come out with my own experiences, what I have gone through, the challenges. Now today on a Women's Day, I would also like to just emphasize on a truly empowered woman is that woman who does not do any rona dhona. No rona dhona. Enough. Gone are the times about like uske paas ye hai, mere paas ye nahi. Uski saadi mere saadi se safed kyun hai? Gone are those advertising days. Why? You can grab things, you can get things what the other person is having. There is no rona dhona in the life of a woman today. There should be no rona. If there is a mountain in front of you, you become a tiger to leap it. But suppose if you cannot become a tiger, what do you become? What do you become? You have to cross that mountain now. Will you say, I don't have the right shoes? Will you say that I cannot climb? Will you say I don't have the time? Will you give excuses? No. A truly empowered woman will become a snake and crawl across that mountain to leap that. You understand? So I am like that. I'm talking from my experiences, totally from my experience. Whenever there has been a mountain, if I have not been able to become a tiger, I have become a snake. And if I have not become, if somebody tries to put his foot on me, when I'm in the snake form, I become an eagle. I fly. So every woman should have the power to transform according to the situation she is subjected to. Adaptability. Adaptability. A woman's life, every woman, whoever is working, having families, taking care of everything, she is like moving in a
train that has got various compartments. Morning, she will be in that Patrawala class. By afternoon, she'll be in the AC first class. By evening, she'll be in the driver's cabin, driving the train. And in the night, she may be that guard who's showing that jhandi, hara jhandi. Isn't it? Yes, ma'am. So we switch our roles. We switch our roles, and every woman can do it only if she believes in herself. If she has that confidence and making best use of whatever you have got. I can see a gentleman here. So everybody should make best use of whatever you have. Not that saying that I don't have this. Count your blessings, be grateful, have gratitude, and have faith in yourself. Take the leap, take the risk. I have been a risk taker. I see women feeling scared of even buying an online clothes. No, I can't buy on. I go and buy online clothes worth 10,000 also. What will happen? Still, I always have that feeling that I should be able to take the risk. That is how my confidence level goes up. That is how I am able to stand on my 2 feet all the time. And at the same time, I will urge all the women that confidence is the very strong element in every woman, which is very much needed in today's world. All those women who are not driving today a four-wheeler, I'll request all of them to drive. Why? Why all women should know how to drive a car? Confidence. It is that self-confidence which it builds in. Why should you be scared of getting the challan? Every month I have a challan issued against my name. Why? And I've been driving since 30 years. It is not that today. I've been driving since 30 years. But I don't add wrinkles to my face. I don't add. I don't even tell my husband that mera challan ho gaya. Why should I tell him? I'll listen 50 words from him. क्या है, कैसे चलाते हो, क्या है, क्यों नहीं करते हो? Why to waste that energy? Give 1100 rupees to that traffic havaldar. Let him enjoy with that money, whatever he wants to do. I don't know. I want my mental peace. Why? That is what a woman should be. Take responsibility of your action. Don't keep getting scolded by your husband, by your sons, by your father, by your brother, by everybody. Because over a period of time, if you see, we women have evolved in such a manner that we have started actually believing in ourselves. Earlier, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती. That has been the trend in earlier times. As a kid, I have seen, and I don't come from Jupiter or Pluto. I come from the same Mother Earth, where similar format of parents were there, who never told their children that you are worth it. So we grew up thinking, questioning our own worth, whether I am worth it or not. Whether I'm worth it. Whenever actual moment comes, the way how you will come as you'll emerge as a winner. This is what I did in my beauty paging. When I went to Gladex Mrs. India, I was actually not knowing anything. With Savdhan and Vishram, two poses of the Indian Army, did not know what an eyeliner is and what a lip liner is. No, what is the difference between the two? And I used to openly accept. See, I will urge all the women through this platform today, please have the boldness of publicly acknowledging your inabilities
hai. No one is going to teach you anything. Rather, you will make enemies only. So the ability, this is what is women empowerment. For me, women empowerment is ability to acknowledge publicly that I don't know how to speak English, or I don't know how to write a particular thing, or I don't know podcast. I don't know what. Today I don't know what a podcast. So I accepted it. Yes, I have to learn what a podcast is. How do you expect anybody to learn everything or know everything? So an empowered woman is ability to learn something new. Happiness, as I said, don't show off. Second is learn something new. Challenge yourself. These days, something new has come on the internet. Wordle. Now, Wordle. Everybody is playing Wordle. And everybody is enjoying. How many women play chess? I don't think many women play chess. Oh, great. Somebody has raised their hand. Good. I'm so impressed. She must be the most intelligent lady in this organization, I'm sure. And it develops your concentration. It develops your ability to think rationally. आप दुश्मन की चाल समझते हैं. You will know how to move. You will know how to save yourself. Chess teaches everything. Please, all women should play chess. There's a series also that was there on Amazon Prime. I think there was a series. You must be knowing that series. Please watch that. The way the woman confidence is built up. So we as women have to come out of that primitive things ki wo karna hai, ye karna hai. But at the same time, I would always say there's nothing wrong and nothing right. Earlier times, nothing, I cannot blame that time as good or this time is bad. Nothing is wrong, nothing is right. Every era is good. We need to grasp whatever we want to take from that era. Isn't it? Don't you agree? Why should I blame my nani dadis? Why should I blame them? Because they were suffering so much in silence, they desired, when they conceived a daughter like me, every woman in those days must have desired that their daughter should be independent, fierce, bold, who can voice out, who can make a choice to stay in a relationship or not to stay in a relationship, or to stay in a workplace or not to stay in a workplace. Whatever. An independent choice making ability. I'm sure those days, with those dadi nanis, many mothers had given up their dreams and all. But then our generation, we are born to rise. We are born to rise. And as a society, you can see the society is evolving. Last 30 years, Indian Army started inducting women. But when I joined, there was nothing called permanent commission. It took them 30 years to bring permanent commission, the parity with the male officers. I fought and fought and fought since 2009. I'm fighting. But I don't blame the system. I have no cribs, no complaint, no rona dhona. I am happy that I could challenge it and I could bring a change in it. That is what a woman empowerment is. There is nothing called rona dhona at all in my dictionary. Nothing. Mere paas to hai hi nahi. That word is not there ki I don't have this. I feel that if I don't have this, I will still make best use of whatever I have. If you remember, we used to read this in school. I studied in St. Mary's Convent, Allahabad. So there was this SUPW classes. It used to be socially useful, productive work. So we used to be told to make best out of some waste. Ice cream sticks se something, chane ka dal se or walnut shell se. I follow that mantra in my life even today. Whatever I get, just make best use of it. That's it. So when I went for my SSB in the Indian Army test in 1993, my father did not want me to go there. Nobody wanted. Actually, it was a very new thing for anybody to think about it. I was the first girl from Allahabad to join Indian Army. People asked, "Ye kya karegi? Tum to ladki hai, ghar baitho types." No, why? What you're doing? No coaching, nothing. So I said, "Theek hai, don't worry. If you're not taking me to the tracks to run or on the roads, I made an imaginary track on my terrace and I started running there at 4 o'clock in the morning.
because a 24-year-old girl in a small town of Allahabad running in the daytime, everybody would have felt what is wrong with this girl. So 4 o'clock, I made use of that terrace. I had an imaginary track and I brought the agility. So I will not take any excuse from any woman saying कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए मुझे ये नहीं कर पाई मैं. You have to grab, you have to create that imaginary track. I failed in English. I failed, in fact, in school only, class 7, because I couldn't comprehend English. I couldn't comprehend English language, and I couldn't talk in English. I couldn't read English, and I couldn't produce very good English. I was studying in a convent. So I was like, failed. You have to repeat the class. And it was like, hi, everywhere. I mean, Ricky fail away types, no? For the whole house, it was like a big shame and all that. And it takes guts to tell people that you have failed. I love my failures. I just love my failures. Today, as you read it, 17 anthologies. My English stories are there. My 4th book is going to come out. Today only my 3rd book is being launched, Olive Green to Beauty Queen. My 4th book, No Woman's Land, is being launched very soon. So how much I must have worked upon. It has not come in as if I've just drank a glass of Horlicks and I've become, all of a sudden become wise. So I will request all women, never do any rona dhona, just make use of whatever you have. One thing, make use of that. Just make use of that. You will reach somewhere. But if you will keep feeling scared, hai kya hoga, the universe will keep producing Xerox copies of your negative thoughts. And you will be enveloped with those negativity, resulting into nowhere. So I believe in that positive thought. That is for everybody. Not even for just for women, it's for men, gentlemen also. That positive, if you feed like a Xerox machine, you feed a particular document. So the universe is a big Xerox machine. If you feed your positive thought into that, it will envelop you with positivity, and you are going to make a difference in the society wherever you go. I'm not at all scared of learning anything new. You give me anything, I'm ready to and enjoy life. Why should I blame life? Why should I blame my parents? Why should I blame? It's so easy to blame actually, and keep that poison inside your heart and keep feeling bad. Or that, for that matter, I said Chalan wala, that traffic guy. I don't blame him. I thank him every time. I thank him whenever he cartos my Chalan. I thank him. I don't want to add wrinkles in my face. Why should I? Why should I be? I should be happy. I did a mistake. Yeah, I should be able to forgive myself. I should take pride in being caught doing a wrong thing. Why should I? Why should I hide? Why should I do? So I take, and that makes me all happy and confident and empowered. That is how I can call myself empowered. Not because what I have achieved in the materialistic world, but what my mind has achieved today. Whenever I feel low, how do I kick myself? I become my own Master Ji. You people are all professionals in the education field. Now, how do I become a Master Ji to myself? I tell myself that, see, I have to think this way. I actually program my thinking. That everybody can do. Actually, because human being is the most evolved species. And we've got a very good brain, isn't it? So we can program ourselves. So that's it from my side. I just wanted to tell you something, what I have learned. This is nothing Gyan, it's just what I have learned. And I just wanted to make an interactive, inspirational and interesting session with all of you, to learn something from you, and so that you learn something from me as well. That's it. Any questions? I'm ready to answer. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Kindly accept a small token of appreciation from our side. Kindly accept it. Oh, and thank you so much. Thank you for your words.
आज के हमारे फेस ऑफ द इवेंट दोनों ही एक ऐसे, मैं मानता हूँ, अपने समाज के अंदर एक ऐसी हस्ती जिनको कह सकते हैं, हमारे अंकिता मैम और हमारे साथ ज्वाइन हमारे पूनम जो है आर्य मैम ने, प्रवेश आर्य मैम ने ज्वाइन कर लिया है। दोनों ही आज हमारे तीनों जो हमारे फेस ऑफ द इवेंट हैं। आई थिंक कुछ देर के लिए जो चीजें रही, जो मैं चीजें थोड़ा सा रह गया, क्योंकि जो टाइमिंग हम लोगों ने सोचा था उसमें कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं कि टेक्निकल इश्यूज और सारी चीजों के कारण थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है। तो हमारे विशाखा मैम जो हमारे कीनोट स्पीकर थे आज के, उनका भी हम सर्टिफिकेट उस टाइम थोड़ा सा उनको देना भूल गए थे। तो विशाखा मैम काइंडली एक्सेप्ट इट एंड सॉरी कि आपको उस टाइम पे हम लोग ये चीज प्रोवाइड नहीं कर पाए। और इसके तुरंत बाद, क्योंकि हमारे फेस ऑफ द इवेंट जो आज के हैं, अंकिता मैम है, हमारे पूनम मैम है, प्रवेश बहन जी हैं, उन सभी ने ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन उससे पहले हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर अर्चना बज मैम, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। उसके बाद हम आज के फेस ऑफ द इवेंट्स के लिए जो हमने हमारे स्टूडेंट्स ने एक वेलकम सॉन्ग अपना जो है शूट किया हुआ था, वो आपके लिए रहेगा, आपको डेडिकेट रहेगा। डॉक्टर अर्चना बज मैम के जो है उसके बाद ओवर टू यू डॉक्टर अर्चना बज मैम। Thank you so much, sir, and a very good evening and a very warm welcome to all of you. So the sun shines brightly only when there is a darkness, and when its radiant glow defeats all the negativity surrounding it. Similarly, we women must also defeat all our darknesses and hardship in our lives so that we can shine the brightest and unlock the power at the right moment to achieve what we desire. So on this beautiful note, I'll try to make this evening little more brighter and little more shiny. So I know there are a lot of women gathered over here. Dr. Ashna Baj welcome all of you on this forum of PAAI, the PAAI रणमय Awards. I know there are a lot of awardees who are here on this forum, and I have listened very good thoughts of two keynote speakers and ma'am, face of this forum, Ankita ma'am. So I think PAAI family, especially Dr. Harshvardhan sir, for giving me an opportunity to bring a smile on our faces, on my faces, on your faces. So smile तो बहुत जरूरी है. Let's smile today. Smile win hearts. मुस्कुराते चेहरे दिल जीत लेते हैं. तो आइए हम सब मिलके मुस्कुराते हैं, क्योंकि आज हमारा दिन है, विमेंस डे है, और मैं कहूंगी आज ही क्यों, हमारा दिन तो रोज है. तो हम लोग आज के इवनिंग को शुरू करते हैं. तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो चीज के लिए ऊपर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, मुझे पता है टाइम इज वेरी लेस. जो मैंने अपना टॉपिक लिया है वो लिया है शाइनिंग. तो हम लोग जो विमेन है, दिस शाइन्स लाइक एनीथिंग. Here I also take an opportunity to congratulate, first of all, I just congratulate all the awardees who have done a extraordinary work in their respective fields. So I congratulate all the awardees who got prizes today, who got mementos and certificates today. It is rightly said by Margaret Thatcher, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. तो सिर्फ बातों से तो पेट नहीं भरता. डेफिनेटली अगर वुमेन को कोई काम दिया जाता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से होता है, और ये बात हम सब जानते हैं. वुमेन ऑलवेज बी इन एक्शन, और हमें हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं उसके. ये आप लोग सब अच्छे से जानते हैं. बिफोर moving ahead, I wish all the lovely women out here who made this evening even more wonderful. Salute to you all, wonderful ladies, and a very happy Women's Day. Purpose of this presentation, which I have just put 2-3 slides, not more, because I know the time is less. So purpose of my presentation today would ensure that we work together to make every day a Women's Day. Every day we would just want to celebrate a Women's Day. Let me take you to the brief history of Women's Day. Why Women's Day got started? I'm just showing us. Everyone are visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Women, it's time to Yes, shine. ma'am. I've written something for you. Women, it's time to shine. We all have to shine like a sun, like a moon. Wonderful, we are wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, and more than that, we are nurturing mothers. I think you all agree with this statement. As I told you, I'll just quickly go through with the history why we celebrate this Women's Day and why this 8th of March is chosen as the celebrating the Women's Day. It is since in 1975 in the United Nations, the Women's Day is celebrated. Objective is to achieve equal rights and opportunities for women as men across the world. Theme for the year 2022, अभी जो मैम बात कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी की, इस बार का जो हमारा थीम है इस साल का है वो जेंडर इक्वालिटी है, नॉट फॉर टुडे बट ऑफ फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी. सो हिस्ट्री है हमारी 1957 में एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी और उनको न्यूयॉर्क सिटी में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है या उनको लो वेजेस दिए जाते हैं कंपैरिजन करें अगर मेन के साथ, तो वहां पर 1500 विमेन्स ने मार्च किया था टुवर्ड्स न्यूयॉर्क टू डिमांड फॉर shorter work hours, better pay, voting rights, and stop child labor. 28th February 1909, first Women's Day was celebrated at US to honor the women protest of 1908 and to demand equality. This is a small go through with why we have why this Women's Day is celebrated on 8th of March. Now it's women. It's time to shine. You can easily visualize the screen. आपको दिख रही है screen सबको? Yes, ma'am. So my friends, it's time to shine. See the moon shine regardless of phase. This is your time, beauty, to shine in all ways. I've written something for you. No more push, regardless. No more have to's and shoulds. This is your time, beauty, to be as wild as wildwoods. From the depth of your soul, go with your flow. This is your time, beauty. Let go, and let go. Warm is the void from which you create. This is your time, beauty, to connect and activate. To shine, beauty, to shine. This is your time, beauty, to shine. This is my time. This is your time. This is our time. So please shine and shine. And let's see. Let's welcome the world to see how we can change this world like anything with our thoughts and with our actions too. You can easily see a picture over here. आपको दिख रही है एक पिक्चर? मैंने एक पिक्चर लगाई है रिसेंटली. अगर आपने ये पिक्चर देखी हो कहीं पर, बहुत रीसेंट पिक्चर है, दिख रही है. ये एक पिक्चर है जो अभी सब न्यूज़पेपर में फ्लोट हो रही थी. हमारी इंडियन फीमेल टीम की पिक्चर है. आप देख पा रहे हैं पिक्चर? जी मैम. यस मैम. हमारी इंडियन विमेन टीम जो है उसकी ये पिक्चर है. टीम which thrashed, which destroy or which defeat Pakistani team in World Cup ODI. Abhi recently. They were truly professional on the field. They were truly professional on the field. But once they were off the field, even the boundaries could not resist them to shower love and affection on Bisaya Maroof's daughter. Bisaya Maroof is Pakistani team captain, Pakistani team leader of cricket team. The love and affection for of Bisaya Maroof's daughter Fatima. This picture has gone viral across the globe, not only because Indian team won the match, but because of their affectionate dil, affectionate heart, and love for the child. ये है हमारी खूबसूरती, हमारी women's की खूबसूरती. Absolutely, ma'am. Absolutely right, ma'am.
your golden words really inspire us, ma'am. Really inspires us. Thank you so much. Thank you so much. And हाँ जी, our second chief guest जो हमारे हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं. Sorry to interrupt you, ma'am. No problem. No problem. Please complete your ma'am. Complete your piece. Yes, ma'am. So this is a lovely moment when cricket has boundaries on the field, but our Indian team breaks all the boundaries of the field. So I have just jotted down quickly कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें. हम हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें. हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं. For this note, I just close my words, and I'm wishing all the beautiful women over here a very happy Women's Day. And ma'am, over to you, because I know time is less and the keynote speakers are, the chief guests are here. So I just hand over the mic to you, ma'am, and then now carry on further. Thank you, ma'am. Thank you very much. मैम प्लीज डॉक्टर अर्चना मैम, आप अपने स्क्रीन को एक बार स्टॉप शेयरिंग का करना पड़ेगा आपको, है ना? राइट सर. थैंक यू मैम. डॉक्टर अर्चना मैम, एक स्मॉल अप्रिशिएशन आपके लिए पहले एक्सेप्टेड. There's some technical fault. I'll try to minimize this screen. Just give me 1 minute. जस्ट अ सेकंड रितु मैम, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रवेश बहन जी और पूनम बहन जी का वेलकम मुझे खुद करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा सालों से जुड़े हुए भी हैं, और एक ऐसे संस्था जिसका नाम है आर्य समाज, उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और अपने उसमें काम भी किया है. और बहन जी ने तो अभी अगर मैं कहूँ इनके बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि पूरा इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जो है समाज के लिए बलिदान कर दिया है. और इन दोनों ने, प्रवेश बहन जी और पूनम बहन जी ने, नैष्टिक ब्रह्मचारिणी की दीक्षा लेकर के आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का इन्होंने संकल्प लिया है. और एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं सैकड़ों जो है कैंप गर्ल्स के लिए लगाए हैं, ताकि वो सेल्फ डिफेंस की जो है सेल्फ डिफेंस को सीख सकें. उनको योगा, उनको जुडो कराटे, उनको लाठी चलाना, तलवार चलाना, ये सारी चीजें उन शिविरों के अंदर जो सिखाया जाता है. और एक ओजस्वी वक्ता भी हैं और जो है एक समाज के सुधारने के लिए अपना जो पूरा का पूरा योगदान भी दे रहे हैं. और स्वामी इंद्रवेश जी, जिनको मैं खुद कहता हूँ कि लाइक मेरा तो नेम ही स्वामी इंद्रवेश जी महाराज की देन है, हर्षवर्धन. तो उस समय उन्होंने जो है स्वामी इंद्रवेश जी के जो है गाइडलाइन के उसमें तत्वाधान में जो है पुनर्जन्म मीमांसा नाम की एक किताब लिखी, जो कि आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहे उस किताब से बढ़ के कोई भी नहीं है. तो आज मैं पूनम बहन जी और प्रवेश बहन जी, आप दोनों का हमारे इस पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप दोनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ. धन्यवाद भाई हर्ष जी. जस्ट एक छोटा सा 2 मिनट का आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आज के फेस ऑफ द इवेंट आप दोनों हैं, बहन जी दोनों, और हमारे जो है मैम है. तो आप लोगों के लिए एक वेलकम सॉन्ग हमारे बच्चों ने शूट किया था, वो आप लोगों के लिए प्ले करना चाहूंगा, ताकि उसके तुरंत बाद हम लोग अपना आज का जो है कार्यक्रम उसको जो है कंटिन्यूसली कर पाए.
I think वो कोई प्रॉब्लम है, बाकी से भी बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने तो वेलकम पूनम बहन जी और प्रवेश बहन जी, और आज के हमारे दूसरे जो चीफ गेस्ट रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। अब आज प्लेटफॉर्म आपको है पूनम बहन जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद भाई हर्ष। सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि महिला दिवस के इस अवसर पर आप लोग ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं और प्रवेश आर्या किसी और कार्यक्रम में आए हुए हैं रोहतक में, तो कोई डिस्टरबेंस हो सकती है। मैं बाहर बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। विचार सुने आप लोगों के बहुत अच्छा लगा, और महिला दिवस के रूप में हम जो आज चिंतन मनन कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं, आज हमारे लिए विशेष दिन है और इस रूप में है कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारे जो प्राचीन जो इतिहास रहा है, वैदिक जो हमारे सिद्धांत रहे हैं, उसमें महिलाओं को कितना ऊंचा स्थान दिया गया था। कहीं ना कहीं समाज की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन मध्यकाल में बहुत बदतर हो गई, परंतु ये 21वीं शताब्दी है, इसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, महिलाएं खूब उन्नति कर रही हैं, विकास कर रही हैं, परंतु वो डायरेक्शन सही है या गलत, उसके ऊपर बहुत सारे अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो आज किसी भी प्रकार से महिला ने अपना जो स्थान बनाया है समाज में, कि पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक कोई भी ऐसी चीज, ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड नहीं है जहां अपनी उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया। परंतु फिर भी हम जब देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में एक मुद्दा लेकर के चले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 150 वर्ष पहले इस अभियान को चलाया था, जब महिलाओं की बहुत बुरी दशा थी कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, किसी का पति जो है मर जाता था, उसको साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी स्थिति में जो वो हम ऐसी अंध परंपराएं ढो रहे थे, उन परंपराओं को तोड़ने का काम महर्षि दयानंद ने उस समय किया था। परंतु आज वही प्रश्न चिन्ह हमारे सामने फिर लगा हुआ है कि हमने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया कि हम किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं हैं। जहां ये मानते हैं कि हमें पुरुषों के बराबर रखा जाए, क्योंकि पुरुषों को हम क्या मानते हैं कि वो बुद्धि में हमारे से तेज हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, शारीरिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं, परंतु जो काम उन्होंने किया है वो ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें महिला शक्ति ने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। परंतु फिर भी ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ रहा है। हम सब के लिए सोचने का विषय है कि
एक तरफ महिला इतनी आगे निकल रही है और दूसरी तरफ उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है। कि पहले उसको मारा जाता था जन्म देने के बाद, परंतु आज केवल उसको 3 महीने की ही जिंदगी नसीब होती है कि 3 महीने के बाद टेस्ट करवाया जाता है और उसको खत्म किया जाता है। और इससे भी आगे जो टेक्नोलॉजी आई है हमारे समाज में, जिसको IVF कहते हैं, और IVF की XY है तो रखा है बच्चे को और XX है तो उसको खत्म कर दिया गया। तो कहाँ तक जो है हम अपनी उन परीक्षाओं को हम देते रहेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक बात यही है कि हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए कुछ बातें विशेष रूप से सोचने की हैं। देखिए, परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमें किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं बनाया। अब कुछ विशेष स्वाभाविक जो चीजें दी हैं, विशेष गुण जो उसके अंदर दिए हैं कि संस्कार देने का काम वो करती है, कि बेटी के रूप में जैसे वो संस्कारित होती है बेटा नहीं हो सकता। और जब वो ससुराल जाती है वहां भी आप देखिए जो समर्पण अपने पति के प्रति उस पत्नी का होता है, पति का कभी भी नहीं हो सकता। वो किस प्रकार से अपने पति को भी एक बच्चे की तरह रख सकती है, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करती है, कितनी ज्यादा उसे कि अब उसको क्या चाहिए सब कुछ उसको प्रोवाइड करके देती है। और माँ के रूप में उस परमपिता परमात्मा ने उसको शक्ति दी है, वात्सल्य की शक्ति, कि वात्सल्य है उसके पास, ममत्व है। वो ममत्व जो है पुरुष के पास नहीं है जो एक महिला के पास है, कि माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से, चाहे वो कितनी भी गरीब स्थिति में क्यों ना हो, कितनी दयनीय स्थिति हो, परंतु फिर भी वो अपने बच्चों की सभी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ममता के रूप में जो शक्ति परमात्मा ने दी है वो अपने आप में अद्भुत शक्ति है। और चौथी बात जो सबसे आवश्यक है और जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, वो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको स्वाभिमान कहते हैं। कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, अपने उस स्वाभिमान को गिरा देते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो हमें संघर्ष करना चाहिए उस संघर्ष से हम पीछे हट जाते हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ कंफर्ट जोन होता है वहीं तक हम चलने का प्रयास करते हैं। परंतु जब तक हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, चुनौतियों को स्वीकार नहीं करके चलेंगे। अब देखिए, समाज है, समाज में 2 ही तरह के प्राणी हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा किससे नहीं है, बेटियों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहते, कहते हैं सुरक्षा नहीं है, परंतु ये सोचना चाहिए कि सुरक्षा किससे नहीं है। जिससे हम सुरक्षित होते हैं वो हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, परंतु समाज में जब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि हमारे उन भाइयों से, हमारे उस पिता से किसी और बहन को जो है तकलीफ होती है, और बहन जो है असुरक्षित महसूस करती है। तो ये फर्क, ये भेदभाव कौन मिटा सकता है, इस खाई को कौन जो है भर सकता है, वो केवल और केवल मातृशक्ति भर सकती है। आज जब भी कोई समाज में घटना घटती है मातृशक्ति को लेकर के, हमारी बहनों को लेकर के कोई भी घटना घटती है, तो क्या होता है, सबसे आवश्यक बात क्या लगती है कि संस्कार नहीं है। अब संस्कार देने का काम कौन करेगा, आप सोचें कि आज ठीक है, राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, किस रूप में बढ़ रही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो है पॉलिटिकल पावर उसके पास है, और भी बहुत सारी चीजों में वो आगे बढ़ रही है, और एक तरह से फाइनेंशियली भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती है। परंतु एक चीज कहीं ना कहीं उससे छूट गई है, और वो जो संस्कारों का जो मापदंड सामने है उसको हमने छोड़ दिया है। और हमारे जो वेद के मंत्र हैं, सीधे सीधे वो ईश्वर की वाणी जिनको कहा जाता है, वो क्या कहते हैं कि सारे कार्य समाज के और कोई कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है कि मानव का निर्माण सबसे आवश्यक है। वो कौन कर सकता है, आप देखिए, को ट्रेनिंग देते हैं कि उनका सही सदुपयोग हो, कुत्तों को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं लोग, परंतु ये कहा इस मनुष्य को अगर सही इंसान को
बना सकता है तो वो केवल और केवल जो है महिला बना सकती है, नारी बना सकती है, एक माँ बना सकती है। तो माँ का जो रोल है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और माँ शब्द आते ही आप देखिए कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो पैदा हो जाती है। और हमारे ये भारतवर्ष है जो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतना ज्यादा सम्मान एक मातृशक्ति को देता है, इतना सम्मान और कहीं मिलता भी नहीं है। परंतु फिर भी हम कोई कोई से रहते हैं। क्यों हम ये कोशिश करते हैं कि हमें पुरुषों के बराबर जाना। अरे पुरुषों से तो ताकतवर एक मातृशक्ति है, वो सृष्टि निर्मात्री है। ईश्वर के बाद अगर ब्रह्मा शब्द किसी के साथ जुड़ता है वो तो केवल परम जो है नारी के साथ जुड़ता है। नारी ब्रह्मा बभूविथा है, वो ब्रह्मा है वो तो। और ये कहा कि बच्चे को हम जन्म देते हैं तो जन्म देने वाली जननी नहीं कहा, एक माता निर्माता भवती कि माँ वो होती है जो बच्चे का निर्माण करती है। अब बार बार हम एक शब्द बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ नारी का सम्मान होगा वहां देवता निवास करेंगे। लेकिन यहाँ केवल दूसरे के कहने से नहीं कि दूसरे हमें सम्मान देंगे, हम दूसरों से अपेक्षा करते रहें कि हमें सम्मान दो, हमें सम्मान दो। हमें भीख नहीं चाहिए कि हमें सम्मान चाहिए, नहीं भीख नहीं चाहिए। हमें खुद के का जो किरदार है वो ऐसा निभाना पड़ेगा समाज में कि अनायास जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हमें जो है रिस्पेक्ट मिले, हमें सम्मान मिले। ऐसे कपड़े हमें करने चाहिए। हमारा रोल जो है, हमारी भूमिका नेगेटिव नहीं, हमारी भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारा रोल पॉजिटिव होने चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए। और आप देखते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो दो डायरेक्शन में जा रही है। या तो अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर गई है या फिर वो अपने बारे में भी बोलना सही नहीं समझती। जायज बात को भी वो जो है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ भी वो बोल नहीं पाती है। तो ये दो तरह के जो कैरेक्टर हैं ये बड़े खतरनाक कैरेक्टर हैं। और एक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपना जो है नॉवल में एक बात कही थी कि नारी जो है ये नदी जैसी है। कि नारी नदी जैसी कैसे है कि नदी जो है दो किनारों से होकर के जब आगे बढ़ती है तो क्या करती है, पूरे संसार को सींचती हुई चली जाती है। परंतु जब नदी के दोनों किनारे टूट जाते हैं तो क्या होता है, विध्वंस कर देती है, विनाश कर देती है। तो कहा कि नारी के किनारे क्या होंगे, शालीनता, उसकी मर्यादा। जब शालीनता और मर्यादा में बंद करके जब वो चलेगी तो कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मातृशक्ति को उसके अधिकारों से उसको दूर कर सके, उसकी जो भूमिका है, जो ड्यूटी है, उसको कोई रोक सके। हमें ऐसा बनना पड़ेगा। अब एक बात आती है परिवार में, जैसे हम कहते हैं, पुरुष कहता है कि इसकी हिम्मत नहीं है कि ये ना कर दे। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं बनना कि इसकी हिम्मत नहीं है कि ना कर दे। नहीं, यहाँ दूसरा शब्द ये आना चाहिए कि ये इतनी समझदार है कि किसी भी बात के लिए डायरेक्ट जो है ना नहीं कर सकती, समझदार है। तो बस फर्क इतना ही है कि समाज की इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। आज आप देखते हो जो जुमले बने हुए, जुमले और चले हैं, अब भी चले हुए हैं। हम कहते हैं जब कोई संस्था, कोई सरकार, कोई परिवार का जो मुखिया है, जब उससे कोई चीज संभलती नहीं है तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो चूड़ी पहन कर के बैठ जाओ। अब आप ये देखिए, चूड़ी पहन करके बैठ जाओ, इसका मतलब क्या है? चूड़ी पुरुष तो पहनता नहीं है, चूड़ी कौन पहनती है? महिला पहनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बस चूड़ी पहन ली ना जिसने, वो किसी काम की नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। और ये बात महिला भी कहती है इस बात को बड़े अच्छे से कि क्या हमने चूड़ी पहन करके थोड़ी बैठे। तो ये चूड़ी पहनने क्या से क्या नहीं कर सकती, आप जरा सोच करके देखें। कहीं ना कहीं हम दूसरों से कभी भी प्रभावित होकर के नहीं चले। जब तक हम दूसरों की शर्तों पे जिंदा रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने सपने होंगे, अपने सिद्धांत होंगे, अपने मूल्य खुद तय करके चलेंगे, तभी जो है हम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। दबाव नहीं कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। अब क्या कहेंगे लोग, हम पहले ही क्यों डर जाते हैं।
हमें निडर होकर के स्वाभिमान के भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे सामने कैसे कैसे उदाहरण हैं। हम वैसे तो ये मानते हैं कि शक्ति के रूप में हम दुर्गा को पुकारते हैं, जो है उसकी पूजा करते हैं। जब हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। जब हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अरे तीनों शक्तियां एक नारी के अंदर विद्यमान है, तो क्यों अपने आप को वो कमजोर समझती है। अपने स्वाभिमान को हमें जगाने की आवश्यकता है। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो उसको आगे बढ़ने से रोक सके। वो केवल स्वार्थी बनने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये मैं समाज से नहीं हूं, समाज मेरे से है। मैं पुरुष से नहीं हूं, पुरुष मेरे से है। कि पुरुष जो है हमारे से चलता है, तो हम क्यों ये मान करके चले कि हमें तो पुरुषों के बराबर जो है आगे बढ़ना। नहीं, पुरुष को जन्म देने वाली एक नारी होती है। इस शक्ति को हमें पहचानना है। और एक बात आती है, जन्मे जने तो भक्त जन, याद आता या शोर, नहीं तो जन्मे बांझ रहे काहे गवाए नूर। ऐसी कोख जो है एक माँ को अपनानी पड़ेगी। वो चाहे जैसा चाहे वो अपने पति को बना सकती है। इतनी पावर एक माँ रख सकती है। अपने भाई को भी सुधार सकती है, अपने पिता को भी सही दिशा में ले जा सकती है। इतनी ताकत रखने वाली एक महिला किस किस रूप में जो है समाज का निर्माण करती है। आप सोचें, कमजोर नहीं पड़ना, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा नहीं करनी, अपने खुद के ऊपर गर्व महसूस करना है कि परमात्मा ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको मैं अच्छे से बखूबी निभा करके जाऊंगी। और ऐसा किरदार निभाऊंगी कि जब इस दुनिया से जाना होगा, लोग मुझे याद रखेंगे। केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं, केवल किरणमयी नहीं, माँ बाप ने हमारा जो नाम दिया है उसको हम जो है इसमें अंके स्वर्ण अक्षरों में लिख करके जाएंगे। ऐसा इतिहास बना करके दिखाएंगे। तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये कभी भी निराशा जीवन में ना आए कि हम महिला हैं, कर सकते, सब कर सकते, बशर्ते हमें अपने स्वाभिमान को जो है जिंदा रखना होगा। स्वाभिमान के साथ ये बढ़ना होगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने कोई नजर उठा करके देख सके। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप अपनी बेटियों को या स्वयं को, और वेद के मंत्र के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, वेद के मंत्र में महिला के लिए कहा है कि महिला का स्वरूप कैसा होना चाहिए, चंद्रमा जैसा नहीं होना चाहिए। सब उसकी तरफ घूरते रहे और हमारी कोशिश भी ये रहे कि हमारे को सब देखें, निहारते रहे। नहीं, ये कहा है कि नारी को जो है 12 बजे का जो सूर्य निकलता है ना, 12 बजे का सूर्य इतना चमकता है कि उस समय उस नारी को देख नहीं सकता कोई भी, इतना ज्यादा तेजस्वी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आई थिंक मैम की, पूनम बहन जी की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क कोई इश्यू हो गया है। पूनम बहन जी, आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है क्योंकि नेटवर्क इश्यू मुझे लग रहा है। पूनम बहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच पूनम बहन जी। आपने यस पूनम बहन जी, आपकी आवाज बीच में जो है कट रही थी। ओके, बिल्कुल सही कहा पूनम बहन जी ने कि आज के टाइम में जब हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को जब फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन गई है। एक औरत जिसका गर्भ जो हमेशा अपने बच्चे के लिए सुरक्षित माना जाता था, वो जो गर्भ है आज कत्ल खाना बन गया है। जो माँ कभी अपने बच्चे के ऊपर एक फूल का प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज वही माँ अपने गर्भ के अंदर उस बेटी को जो है उसकी भ्रूण हत्या करवा सकी, नजर उठा सकी। हमेशा सम्मान का भाव जो है एक नारी का। जी बहन जी, आपका नेटवर्क इश्यू था बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में।
अच्छा, तो मैंने जी अपनी बात पूरी कर दी है वैसे तो। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने का बहुत भाई हर्षवर्धन बहन पूछी जी, आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने जो है हमें साथ रखा और इस बारे में विचार रखने के लिए जो है आपने बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कीमती समय दिया। आप इसमें एक दूसरे फंक्शन में भी थे, दूसरे प्रोग्राम में है, लेकिन वहां पर भी आपने अपना टाइम निकाला। में आए हुए हैं यहाँ पे रोहतक में कोई कार्यक्रम है ये यहाँ पे, तो जी उसमें भी तो हमारी वेबिनार सीरीज चलती है हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। उसमें एक दिन आपका जो पूरा 1 घंटे का हम लोग चाहेंगे कि आप हमें अपना समय दें, और हमारे जो एडुकेटर्स हैं वो बहुत सारी चीजें आपसे सीख पाए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और एक जो छोटा सा हम अपने हर एक कीनोट स्पीकर को, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे फेस ऑफ द इवेंट्स को जो हम देते हैं, एक छोटा सा एप्रिसिएशन के तौर पे एक ई सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, इसको आप कृपया स्वीकार करें, ताकि हम लोग इस चीज को माने कि बहन जी हमारे इस प्रोग्राम से बहुत खुश हुए। धन्यवाद बहन। धन्यवाद भाई, बहुत यस रुचि मैम, प्रियंका मैम और रितु मैम, नाउ ओवर टू यू। आज का जो हमारा मेन है लोग स्टार्ट करें। Thank you very much, sir. Thank you very much. The two most important days in your life, and the day you find out why. Now the wait is over for the awardee, so let's appreciate the awardee. I think all of you are looking for your awards. Be ready, please. Sir is sharing the. So our first PAAI रणमय award goes to Mrs. Vandana Singh, co-founder of PAAI. Heartiest congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. Tamanna Sharma. Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Meenakshi Devi. Congratulations, ma'am. Next awardee is Professor MS Jeena Munawara. Congratulations, ma'am, and best wishes. Next awardee is Professor Rashmi Bharadwaj. Heartiest congratulations to you, ma'am. Next awardee is Miss Mantaha Sheikh. Congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. V. Devi. Heartfelt congratulations to you, ma'am. Next awardee is Dr. Deepthi Gaur. Best wishes, ma'am. Next awardee is Mrs. Priyanka Rastogi. Heartfelt congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. Shanoli Roy. Congratulations, ma'am. Aradhana Tiwari. Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Prachi Barne. Heartfelt congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Aarti Sharma. Best wishes, ma'am. Next awardee is Mrs. Sharda Chakrabarti. Congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. V. Kalaivani Mudaliar. Heartfelt congratulations and well deserved. Next awardee is Miss Ritu Gupta. Thank you, Congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Next awardee is Mrs. Gladys Punita.
Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Otlia Pintia. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Marine Tangtaje. Congratulations and best wishes, ma'am. Next award, congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. Sonia Gupta. Heartfelt congratulations to you, ma'am. Next awardee is Miss Pooja Verma. Congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. Iman A. Alam. Sincere congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Nutan Khan. Heartfelt congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. Neetu. Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Durga Yadav. Heartfelt congratulations, ma'am. Next awardee is Miss Manju Chaudhary. Warmest congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Mrs. Harmeet Kaur. Heartfelt congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. T.R. Anandi. Best wishes, ma'am. Next awardee is Mrs. Meenakshi Juneja. Heartfelt congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. Suraya Bano. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Archana Chaudhary. Congratulations and well deserved, ma'am. Thank you so much, ma'am. Next awardee is Mrs. Ranjita R. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. Ruchi Singla. Heartfelt congratulations, ma'am. Next awardee is sincere congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. Evelina Mandal, Mrs. Anika Maria Tanteneje. Congratulations, ma'am. Next awardee is Dr. S. Manimakalai. Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Ranjana Sharma. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Miss Arpita Ghosh. Congratulations and best wishes, ma'am. Next awardee is Mrs. Poonam Agarwal. Congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Priyanka Jain. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Shalu Sharma. Congratulations, ma'am. Next awardee is Miss Saloni Galudia. Congratulations, ma'am. Next awardee is Miss M. Shobana. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Devjani Mitra. Heartiest congratulations to you, ma'am. Next awardee is Mrs. Vandana Chaube. Warmest congratulations, ma'am. Next awardee is Mrs. Jyotsana Malviya. Warmest congratulations, ma'am. And next awardee is Dr. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Next award is Dr. Bhavna Chibar. Congratulations to you, ma'am. Over to you, Priyanka, ma'am. Thank you so much, Ritu ma'am. A strong woman works out every day to keep her body in shape. But a woman of strength builds relationships to keep her soul in shape. A strong woman isn't afraid of anything, but a woman of strength shows courage in the midst of her fear. A strong woman won't let anyone get the best of her, but a woman of strength gives the best of herself to everyone. So I am announcing a few more best out of us. So our next awardee is
Kamna Vishkarma ma'am. Heartiest congratulations, dear ma'am. The next awardee is Somna Adhikari ma'am. Heartfelt congratulations, dear ma'am. The next awardee is Mrs. Simi Singh. Warmest congratulations, dear ma'am. Next awardee is Mrs. Aisha Tazneen. Heartfelt congratulations, ma'am. Our next awardee is Dr. Sarsati. Thank you very much. Thank you, ma'am. Next awardee is Dr. Sarsati Bai Rathi. Heartfelt congratulations, dear ma'am. The next awardee is Mrs. Dhanlakshmi V. Mrs. Dhanlakshmi V. Pleased to see you accomplishing great things, dear ma'am. Our next awardee is Mrs. Manjusha ma'am. Sincere congratulations, dear ma'am. Our next awardee is Alfia ma'am. Thank you, Heartfelt ma'am. congratulations, Alfia ma'am. Our next awardee is Mrs. Garima Singh. Congrats and well deserved, ma'am. Our next awardee is Mrs. रणमय. Heartiest congratulations, dear ma'am. Our next awardee is Anshu Mitra Banerjee. Sincere congratulations, Anshu ma'am. Meena ma'am, well deserved, Meena ma'am. Our next award, Mrs. Vasanthi. Well deserved, Vasanthi ma'am. Our next awardee is Mrs. Srishti Gulati. Not you accomplish. Our next awardee is Miss. Our next awardee is Mrs. Neelu Kataria, ma'am. Well deserved, Neelu, ma'am. Our next awardee is Mrs. Manjula Tyagi, ma'am. Heartfelt congratulations, Manjula, ma'am. Our next awardee is Mrs. Saraswati S. Heartfelt congratulations, Saraswati, ma'am. Our next awardee of the evening is Mrs. Bhavya S. ma'am. Heartfelt congratulations, ma'am. Ma'am. Mrs. Shweta Rastogi, ma'am. Heartiest congratulations, dear Shweta, ma'am. Thank you so much. And thank you, Dr. Hirsch, for calling me. It was a wonderful opportunity and a lovely family of fun. Thank you so much. Mahila Mukherjee, ma'am. Ms. Harsh Sethi. Warm wishes, dear ma'am. Our next awardee is Mrs. Jasvinder Kaur. Congratulations and best wishes, dear Jasvinder, ma'am. Our next awardee
Poonam ma'am, you well deserved, dear Poonam ma'am. Mrs. Kiran Bajaj ma'am, well deserved, dear Kiran ma'am. Ma'am. Our next body is Mrs. Suman. Warm greetings, ma'am, from all of us. Our next awardee is